Yes, this chapter number 6 in your book Vistas, on the face of it, if we talk about the simple idea of the chapter that is conveyed in this is, it is in the form of a play and deals with the idea that appearances are generally deceptive. Means जो हमें दिखाई देता है रियलिटी में कई बार वो नहीं होता, और हमें देखने में कोई चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, वो डिसेप्टिव भी हो सकती है। उससे हमें धोखा भी हो सकता है। सो appearances are generally deceptive. On the face of it, everything seems to be all right. कि हमें देखने में लगता है कि सब कुछ ठीक है, but actually it is not so. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं भी हो सकता। देखने में हमें, जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है, बहुत देखने में सुंदर लग रहा है, सब कुछ अच्छा है उसकी लाइफ में, बट इट इज नॉट ऑलवेज दैट। समटाइम्स इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। क्लियर? कि अंदर से अगर हम उसकी लाइफ के बारे में या उसकी रियलिटी को जाने तो बहुत बार कई बार प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उस पर्सन की लाइफ में, कोई और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। So in this way, it is not always the same that we feel. The sense of alienation. Alienation क्या होता है? Loneliness. Gives one much more pain than any physical impairment. कि अगर कोई person physically impaired है, उसके पार्ट बॉडी पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज उसको इतना परेशान नहीं करती कई बार, जबकि जितना कि उसकी लोनलीनेस उसको फील करती है। लोनलीनेस मीन्स वो अकेला रह रहा है, उस चीज से वो परेशान है, तो इस तरीके से वो उसको ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगा बजाय इसके कि वो अपनी इम्पेयरमेंट से या अपने बॉडी पार्ट से किसी तरह से परेशान हो। ठीक है? तो इस तरीके से जो लोनलीनेस है, जो आदमी अकेला रह रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कई बार कारण हो जाता है। बिकॉज यू हैव रेड माइट इन योर सोशल साइंस ऑल्सो, इन योर जूनियर क्लासेस, इन 10th क्लास ऑल्सो, इन द civics, that man is a social animal and we human beings cannot live alone. We have to take the support of each other to live in this society. इस सोसाइटी में रहते हुए हमें एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है, और अकेले रहते हुए जो आदमी अपने आप में बहुत ज्यादा टेंस महसूस करता है, यू कैन नॉट शेयर योर फीलिंग्स, योर सॉरोज एंड योर हैप्पीनेस विद एनीवन, and that causes great trouble to a person. So human beings are social animals and they need to take the help of others. तो इस तरीके से जो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है या एलिनेशन की फीलिंग है, वो ज्यादा परेशान करती है उस व्यक्ति को जो फिजिकली इम्पेयर्ड है। उसके बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको इतनी परेशानी नहीं करती जितनी कि उसकी लोनलीनेस उसको परेशान करती है। दीज आर द टू आइडियाज विच आर डेल्ट इन दिस स्टोरी. In this story, or we can say in the play, what we are told about, there is in the play, on the face of it, Susan Hill, who is the writer, wants to convey that a physical impairment is always painful. It makes one pessimist and even cynical in the face of neglect by others. कि जो आदमी फिजिकली इम्पेयर्ड है वो बहुत ज्यादा उसके लिए पेनफुल होती है ये चीज, एंड पर्सन बिकम्स पैसिमिस्ट, निराशावादी जिसको कहते हैं, कि हमेशा वो डिप्रेस्ड, सैड और अपने आप में निराश रहता है, और वो हमेशा ये क्या महसूस करता है कि सोसाइटी जो है उसको निग्लेक्ट कर रही है, लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट इम्पेयरमेंट. Its pain is often less than the sense of alienation felt by disabled person. As I have already discussed, कि जो पेन या जो परेशानी उसको अपनी फिजिकल इम्पेयरमेंट से है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि उसको परेशानी तब होती है when he is suffering from alienation, from loneliness in his life, because he felt that people are neglecting him, people don't want to mix with him, people don't want to talk to him, so he separated himself from the society. वो अपने आप को खुद ही सोसाइटी से कई बार सेपरेट कर लेते हैं, जिससे कि वो लोनलीनेस की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं. So its pain is often less than the sense of
alienation felt by a disabled person. A person with a disability wants others to treat him normally without showing any over concern और pity. वो नहीं चाहते कि उनके लिए कोई एक्स्ट्रा पिटी या एक्स्ट्रा ओवर कंसर्न कोई दिखाए. दे वांट टू लीड नॉर्मल लाइफ. कि अगर हम बार बार उनके पिटी उनके ऊपर शो करें या उनका कोई ओवर कंसर्न शो करें, तो इससे क्या फील होता है कि वी वांट टू मेक देम रियलाइज अबाउट देयर डिसेबिलिटी. वो क्या फील करते हैं कि हम उनको उनके डिसेबिलिटी के बारे में रियलाइज करवाना चाहते हैं कि उनमें इस चीज़ की कमी है, जिस वजह से हम उनका बार बार ध्यान रख रहे हैं या हम उनके लिए ज़्यादा कंसर्न्ड हैं. तो दैट पेन्स देम टू मच, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. इसलिए this is another suggestion or the message given by the writer that we should not show over concern for these type of people. We should allow them also to lead a normal life. So the author also describes a bond of friendship between two physically challenged person. This is another idea or the message conveyed through this play कि राइटर जो है हमें क्या बताना चाह रहा है इसमें कि दो फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन जो है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जो है, उन दोनों का आपस में फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है. क्योंकि वो दोनों क्या समझते हैं कि दोनों में ही किसी ना किसी चीज़ की कमी है, इसलिए कोई भी उनको ओवर कंसर्न या ओवर केयर शो नहीं करेगा, कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाएगा. सो दे हैव अ गुड बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. एज इन द स्टोरी you have read already, lamb who has a tin leg and walks with a limp, थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है, उसकी टांग में प्रॉब्लम है because he has lost his leg in the war and now he is having a tin leg. And the second character is Derry, who has half burnt face due to acid burns. उसका एक साइड का चेहरा जो है एसिड के साथ खराब हो चुका है और he avoids to go amongst the people. लोगों के बीच में जाने से वो अवॉइड करता है क्योंकि उसको यही लग रहा है कि हर कोई उसके चेहरे को देखेगा और उसके बारे में बातें करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, एंड nobody wants to mix up with him. So this type of inferiority complex he has developed in himself. बोथ द पर्सन्स फील नेग्लेक्टेड. तो इस तरीके से दोनों ही जो हैं सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं. मिस्टर लैम एज वेल एज डेरी ऑल्सो. However, Lamb convinces Derry that life is worth living. लेकिन लैम का एटीट्यूड लाइफ के लिए पॉजिटिव है, वेयर एज डेरी इज हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड. जो लैम्प है he always looks to the positive side of everything, whereas Derry looks to the negative side. वो हमेशा हर चीज में उसको गलत नजर आता है. So what we are told here about these two characters कि Mr. Lamb convinces Derry, वो उसको भी convince करता है कि life is worth living, कि ये life जो है वो बहुत अच्छी life है, बहुत pleasant life है, and it is worth living. Derry realizes it and promises to come to him again. और बहुत सी वो एग्जाम्पल्स देता है, एज यू हैव रेड इन द प्ले, उसको बहुत सी स्टोरीज सुनाता है उसके माइंड को चेंज करने के लिए. और एट द एंड व्हाट वी सी, डेरी चेंज his opinion, he realizes everything, and he promised him to come back again to his garden. But what we see at the end, lamb has a fall and he dies, and Derry, who keeps his promise, is in distress. He is sad now when he reaches, and Mr. Lamb has fallen down from the steps and he died there. When he found that Mr. Lamb has died, he feels very sad and depressed. So it is, however, certain that he is going to face the world boldly as he has accepted himself as he is. And we find him a changed man at the end of the play. इस प्ले के एंड में हम क्या देखते हैं कि डेरी जो है, जो टोटली शुरू में हमें नेगेटिव ओपिनियन और एटीट्यूड वाला दिखाया गया था, वो एंड में आकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ लीड करना चाहता है. एंड ही हैज एक्सेप्टेड ऑल द आइडियाज व्हाट मिस्टर लैम्ब हैज गिवन टू हिम, and he felt that now he would be able to lead a life in a bold way and would live this life positively. So if we go for the important characters of the story, Mr. Lamb and Derry, we can see a total difference and opposite characters. Mr. Lamb is an old handicapped person. He has lost one leg in the war, so he walks
with a limp, with his tin leg, and children call him Lemmy Lamb. He never minds when the children just made fun of him, calling him just like a Lemmy Lamb. People generally avoid him. Even Derry's mother has a negative opinion about him. We have seen when the discussion was given between Derry and his mother, कि जब वो घर जाता है और अपनी मदर को कैसे कन्विंस करता है कि वो वापस मिस्टर लैम के पास जाना चाहता है, उसकी बातें सुनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है उसकी बातों में. So we get the negative opinion of his mother also. Even Barry's mother has negative opinion about Mr. Lamb. He longs for human company and suffers from the pains of loneliness. कि और करेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी है उसकी? He is suffering from loneliness. और वो चाहता है कि कोई उसके गार्डन में आए और उसके साथ टाइम व्यतीत करे. That's why he always says the gates are always open. उसके घर के गेट खुले हैं, उसके गार्डन के गेट हर एक के लिए खुले हैं. He never uses any curtains on the windows of his house, never closes the doors. तो क्या कहता है कि उसके घर के दरवाजे हमेशा हर एक के लिए खुले. That shows his feeling of loneliness. And then we come to know when Derry tells him that he will come back, but he does not believe. वो इस चीज पे विश्वास नहीं करता. कहता बहुत से लोग ऐसे ही आते हैं और कह जाते हैं, but they never return because he feels the loneliness. From here, all these 2 points, we come to know that he suffers from the problem of alienation, from loneliness, and he also wants to have the company of someone. Then another characteristic for this character, we can say that he is a kind and generous man. He welcomes everyone to his garden and ignores the faults and shortcomings of others. When Derry enters his garden secretly, दीवार को जंप करके वो एंटर करता है. ही डज नॉट एंटर फ्रॉम द गेट, ही इग्नोर्स इट. ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज वेल बीइंग. कि उसको कहता है कि ध्यान से चलना, वाइल्ड एप्पल्स है, उसके ऊपर पैर आ जाएगा, आपका गिर जाओगे. दैट मीन्स ही जस्ट वॉर्न्स हिम एंड ही इज वरीड अबाउट हिज वेल बीइंग. ही डज नॉट वांट दैट एनी प्रॉब्लम शुड बी देयर. और अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसने नोट करा कि डेरी के करेक्टर में बहुत नेगेटिवनेस था, बहुत ज्यादा वो नेगेटिविटी के साथ सोचता है, तो ही ट्राइज टू चेंज हिम. He tries to bring the positive attitude in his life and tells him many interesting stories, giving examples of the garden and everything in life that we should ignore if we don't have interest in anyone. लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, अगर हम लोगों की बातों पे जाएंगे तो we cannot lead a life. फिर उसको समझाता है कि अगर आपका फेस का एक साइड बर्न है तो it does not mean that he cannot do anything. वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, ब्रेन है, जैसे आम नॉर्मल सब लोगों के पास होता है. एंड व्हाई कांट ही डू एनीथिंग? तो उसको मोटिवेट करता है दैट देयर इज नो प्रॉब्लम दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग. और उन लोगों से वो कई गुना बेहतर है जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, या बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, या वो चल नहीं सकते. वो उन लोगों से बहुत बेहतर है. और इफ ही डिटर्मिन्स टू डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग. उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि आपका फेस जो है वो एक साइड से बर्न है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तो इस तरीके से उसको वो मोटिवेट करता है. सो ही मोटिवेट्स अदर्स एंड इज अ वेरी काइंड एंड जनरस मैन and welcomes everyone in his garden, in his house. That shows when he tells that the gates are open every time, curtains are not there, I want to have the outside air and sunlight in my house. So in this way, all these things shows that he's very open minded person and he's very kind and generous man. Then another quality which we find in his character, that he's an optimist. ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी, जो हमेशा अच्छे के बारे में सोचता है, अच्छा पॉजिटिव आउटलुक है उसका लाइफ के लिए. इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकैप, ही एंजॉयज हिज लाइफ. ही बिलीव्स दैट वन शुड नॉट गिव अप होप एंड फेथ इन वंस ओन कैपेबिलिटीज. कि जो भी उसमें कैपेबिलिटी है उसमें उसको होप रखनी चाहिए, उसी में बिलीव करना चाहिए. एंड ही टेक्स इंटरेस्ट इन एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द गार्डन. He tells Derry that he takes interest in watching, listening and thinking. Very important thing which he told Derry, कि वो हमेशा किस चीज में विश्वास रखता है? Watching, listening and thinking. कि इधर उधर देखो आपके आसपास क्या हो रहा है, फिर उसके बारे में सुनो, लोगों को सुनो, लोग क्या कहते हैं उनकी बातें सुनो. Then think over, फिर उसके ऊपर सोचो, and then do your actions.
ये नहीं कि अगर लोग कुछ गलत कह रहे हैं तो आप उसको अपने माइंड पे लगाकर डिप्रेस्ड फील करो या सैड फील करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट लुक अराउंड what is happening all around you. You must watch the things, listen the things, and then think over and do your action according to your capabilities, according to your abilities. He gives the example that he grows fruit trees, listens to the singing of the bees, picks the crab apples off the branches, and in his spare time he reads books. He is fearless and open minded. He likes to live in the open air. See, all these points goes in his positivity attitude, कि उसका एटीट्यूड जो था वो पॉजिटिव था, तभी वो ये सारी बातें उसको बताता है डैरी को. ही कीप्स हिज फ्रंट गेट of the garden open so that anyone who wants enter and face no problem. He has no curtains at the windows. He likes to keep the windows open to hear the music of the wind. And in his generosity, he says, what is mine is anybody's. Note down this phrase. When he says, what is mine is anybody's, वो ये नहीं सोचता कि जो उसका है वो उसी का है. जो कहता मेरा है वो किसी का भी हो सकता है. भगवान ने एक हमें एनवायरनमेंट दिया है या सनलाइट दी है या एयर दी है, तो वो कहता मैं उसको बंद क्यों करूं खिड़कियां और कर्टन्स लगाकर. इट इज फॉर ऑल एंड एवरीवन कैन एंजॉय. गार्डन है तो वो कहता वो सबका है. इट इज नॉट माइन. दैट्स व्हाई द गेट्स आर ऑलवेज ओपन. एनीवन कैन कम. दैट शोज हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड life and his optimistic nature. All these points what he tells. Then another quality we can say that he is very helpful to everyone. He encourages Derry to develop a positive outlook on life. He tells him that he should hear only those things that he wants to hear. कि हमें दूसरों की बातें सुन के डिप्रेस नहीं होना, हमें सिर्फ वो चीजें सुननी है जो हमारे बेनिफिट के लिए हैं. और अगर लोग कुछ और बोलते हैं तो इग्नोर दैट. We must ignore those things. We must avoid such type of people who are criticizing you, who are talking wrong about you. So we should have the positive outlook. He tells him that he should hear only those things that he wants to hear. He tells him that he ignores the unpleasant remarks of the kids. कि बच्चे उसको आकर क्या कहते हैं, लैमी लैम, लेकिन वो फील नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट नहीं करता, वो उनको इग्नोर करता है. He says, when I go down the street, the kids shout lammy lamb, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, इनटू हिज हाउस. क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं करता, इसलिए बच्चों को भी बुरा नहीं लगता और वो अभी भी इसके गार्डन में आते हैं. एंड इट इज जस्ट लाइक ए गेम फॉर देम कि जब वो वहां होता है उसको लैमी लैम कहते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं बच्चे भी, एंड ही ऑल्सो एंजॉयज देयर कंपनी. Thus he tries to convince Derry that the world is not as bad as he thinks. उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि ये दुनिया उतनी खराब नहीं है जितना कि तुम सोचते हो. क्योंकि उसकी सोच क्या थी कि द वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर हिम, क्योंकि हर कोई उसके बारे में बातें करता है, हर कोई उसके फेस के बारे में बातें करता है, जो उसने सुना लोगों को उसी से उसका ओपिनियन बना हुआ था. लेकिन मिस्टर लैम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है. ही इज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज एटीट्यूड. And we note at the end of the chapter that he was able to change the attitude of Derry also. And we see Derry in positivity, in positive attitude. He convinces his mother and came back to the garden of Mr. Lamb. That was the change in his attitude. और क्या कहता है वो अपनी मदर को कि अगर मैं अब नहीं गया तो मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगा बाहर, या कभी भी मैं दुनिया को फेस नहीं कर पाऊंगा. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट मिस्टर लैम इज वेरी नाइस ओल्ड मैन, and in spite of his handicap, he finds life worth living. He motivates other, very kind and generous person, and encourages Derry to enjoy this life with all the capabilities whatever he have. And if we talk about the character of this boy Derry, side by side we have discussed that also, but still you can note down some of the important points. Derry is a young boy of 14. He has an ugly half burnt face due to acid burns. He suffers from inferiority complex and remains conscious of his handicap. Always he is alert, he is conscious that he is suffering from the problem of acid and no one likes him, no one wants to have feeling of love with for him, no one wants to mix up with him. So he feels totally hopeless and lost. पूरी तरह से उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ जो है कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट वर्थ लिविंग, वो इस लाइफ में जिंदा ही नहीं रहना चाहता. He feels totally hopeless.
सो पीपल स्टेयर एट हिम, उसको क्या होता है, लगता है कि लोग उसकी तरफ घूर कर देखते हैं, स्टेयर करते हैं उसको, उसको अवॉइड करते हैं, उसको हेटेड करते हैं। सो ही ऑल्सो स्टार्ट्स हेटिंग दोज पीपल। तो अपने आप ही उसके माइंड में एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड जो है लोगों के लिए क्रिएट हो जाती है। इवन हिज पेरेंट्स शो ओवर कंसर्न एंड पिटी। we get the example, you can quote the statements from the play, जब वो क्या कहता है कि जब वो हॉस्पिटल से आया था तो उसके घर के लोग क्या कह रहे हैं, ही शुड बी लेफ्ट देयर ओनली, उसको घर लाने की जरूरत नहीं थी, उसको हॉस्पिटल में ही रहने देते, ही वाज बेटर देयर। एंड देन समवन फ्रॉम द फैमिली और द रिलेटिव्स दे सजेस्टेड दैट दीज टाइप ऑफ हैंडीकैप पीपल शुड बी केप्ट टुगेदर, कि अगर ब्लाइंड है तो इनको ब्लाइंड लोगों के साथ ही रहना चाहिए, अगर लेग्स में प्रॉब्लम है तो ऐसे लेम लोगों के साथ रहना चाहिए, ब्लाइंड है तो अगर वो डेफ है तो डेफ के साथ रहना चाहिए। मतलब ऐसी भी स्टेटमेंट्स उसने सुनी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। he does not like the members of his family also due to all these because they keep on pitting him, कि ओवर पिटी दिखाते हैं, ओवर कंसर्न दिखाते हैं, जिससे कि उसको रियलाइज होता है कि उसमें कोई ना कोई वीकनेस है। if we give normal attitude to those people then they feel better। सो इस वजह से उसको अपने फैमिली मेंबर्स भी पसंद नहीं थे। और इवन फॉर द मदर ऑल्सो ही सेज कि व्हेन ही किसेस और ही वांट शी वांट्स टू शो हर फीलिंग ऑफ लव, शी ऑल्सो kiss on the other side of the face, that was quite right। so it is only Mr. Lamb who motivates him and who gives him hope and confidence। so Derry is drawn towards Mr. Lamb because he shows no pity or sympathy, उसको कोई एक्स्ट्रा पिटी या एक्स्ट्रा सिंपैथी शो नहीं करता, इसलिए डेरी जो है वो मिस्टर लैम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसकी बातों में उसको कुछ अच्छाई नजर आती है, कुछ पॉजिटिविटी नजर आती है, एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग टुवर्ड्स हिम, लिसनिंग टू हिम and understanding his ideas, what he tells। he learns from him as to how to face the world, कि इस दुनिया को, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है। he learns from the talking of Mr. Lamb। Derry has begun to hate people because he attaches too much importance to the unpleasant remarks that they make about him। we can give the example here कि जब वो एक बार बता रहा है कि बस स्टॉप पे था तो how the ladies were talking about his face, that what would he do, no one would love him, and about the family members statements also, we can give those lines as proof to prove this point, that he has started hating the word and the people for the remarks what were given to him। but when Mr. Lamb tells him that he should hear only those things that he wants to hear, he undergoes a change in his attitude towards others। जैसे मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं बातों को सुने जो कि उसकी अच्छाई के लिए हैं। अगर लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं तो ही शुड नॉट लिसन टू देम। देन ही स्टार्ट्स हैविंग चेंज इन हिज माइंड, तभी उसके माइंड में उसकी सोच जो थी वो बदलनी शुरू हो जाती है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले वी फाइंड दैट डेरी इज पेसिमिस्ट इन हिज अप्रोच, he is very much depressed, very sad and tensed, and when he meets Mr. Lamb in the garden, after that, with his stories, with his examples, there is a total change in his attitude and he's very much impressed by the way Mr. Lamb lives, and we find him at the end a changed personality and a bold one, ready to face the challenges of this life, ready to do anything in life, and having very optimistic approach, positive outlook towards life। so if we talk about the title of the play, the title is very appropriate because it is a suggestive title, and we come to know that Mr. Lamb, who seems to be happy and contented, we can explain about him that he has a tin leg because of one leg that was blown off in the war. People avoid him and children tease him by calling Lammy Lamb. He seems to have accepted life as it is. He encourages even Derry to have a positive attitude in life, and he tells him that he likes to talk to people, and for that he keeps his doors open. He enjoys sitting in the sun, growing plants, flowers, and reading books, etc। सो इन रियलिटी हाउएवर ही इज टेरिबली लोनली। अगर हम एक्चुअल में देखें, रियलिटी में देखें, उसकी बातों को ध्यान से समझें, तो वी फील दैट ही ऑल्सो फील्स लोनलीनेस। टुवर्ड्स द एंड of the first scene, he displays signs of loneliness and disappointment. He yearns for human company.
He thinks that even Derry will not come back to him again. जब वो वहाँ से जा रहा है कि वो अपनी मदर को बताकर दोबारा आता है, तो उस टाइम की जो उसकी फीलिंग या उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें क्लियरली शो करती हैं that he also feels loneliness in his life, though he does not tell anyone. And he told Derry even this thing, that he is very happy in his life and he enjoys the company of those who come in the garden and the children who play there. He was a man with a positive outlook, but he hides a deep sense of alienation, loneliness की अपनी feeling को छिपाने की कोशिश करता है. And this play, when we read thoroughly and till the end, we feel that everything seems to be all right, but actually it is not so. So the theme that appearances are always deceptive comes clear to our mind when we look at the situation of Mr. Lamb. कि हमें देखने में लगता है कि वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे तरीके से लाइफ लीड कर रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो लोनलीनेस की फीलिंग को सफर कर रहा है. ही इज सफरिंग फ्रॉम द लोनलीनेस प्रॉब्लम. एंड so what we feel that everything is right is not like that. So sense of alienation gives much more pain than the physical impairment he had. So we can say the title is appropriate and suitable according to the story. If we go for the theme, as we have discussed it again side by side, but separately, if we want to write about the theme, it is again, we can start with the same line that appearances are generally deceptive. And this play, where we see Lamb as a very happy and contented person, is not really very happy, but he has a positive attitude towards life. And the second character, Derry, who has a negative attitude to life, both differs in their opinion, and how Mr. Lamb motivates him, encourages him, and changes his attitude from negativity to positivity. That tells us that the writer wants to tell us that it is our thinking, how we want to lead the life, how we take our life. And Mr. Lamb is there to encourage Derry, and at the end, we find him as a person with a positive outlook. So, what he wants to tell us, that whatever the things or the abilities or the capabilities the God has given us, we must accept that and lead our life positively. We should not think about the people, what they say, not have hatred for all. We must consider them as our friends and learn whatever we can from them, being positive. So the play also deals with the idea that a physical impairment is always painful. It makes one pessimist and even cynical in the face of to neglect by others. Its pain is often less than the sense of alienation felt by a disabled person. So a person with a disability wants cheers and wants good treatment from others, but not over concern or pity. He wants real encouragement to live his life meaningfully, as Mr. Lamb was there, and he encourages Derry also. Both suffer from alienation, but Mr. Lamb was leading life in the positive way, whereas Derry was leading in the negative way. And at the end, we find change in his character also. So the writer only wants us to lead this life in a positive way with all the good outlook towards life, and whatever the problem we have, we must face that. But there's a message for the ordinary people also, that we should not show over concern, pity, and sympathy for those people who are physically impaired. We must take them as the normal people, so that they could not realize about the lacking point or the weakness. If they have any, they should be encouraged to do the things just like the normal people. So I have summed up the whole story of the play to you. You must go through the play, and still, if you have any problem, you can ask your queries. Thank you.